We are live now. Very good morning to you all. On behalf of Psychology Department, St. John's College, Agra, I welcome you all on this 13th episode of this webinar. Today, the topic on which our expert will speak is mindfulness, a better way of living. The term mindfulness may be new to many of us. So, exactly what does this mean? According to the definition, mindfulness is a state of active, open attention to the present. This state is described as observing one's thoughts and feelings without judging them as good or bad. तो माइंडफुलनेस कुछ और नहीं है, बस जागरूक होना है। दिन प्रतिदिन के समय के साथ हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बढ़ रहे हैं और हर कोई चाहता है कि वो बेहतर करे और इसी कारण वो भाग-दौड़ में लगा रहता है और लोगों में कंसंट्रेशन की कमी और स्ट्रेस जैसे लक्षण दिखते हैं, जिसे वे दूर करने की भरसक कोशिश करते हैं और वे एक्सरसाइज करते हैं या मूवीज देखते हैं या घूमने-फिरने जाते हैं, लेकिन इन सब के बहुत अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। अपने मन को वर्तमान की चीजों पर केंद्रित करना ही माइंडफुलनेस है, जो मूड में सुधार और तनाव करने में सहायक होता है, तनाव को कम करने में सहायक होता है। So today, our eminent speaker, Professor Amol Ranjan, a clinical psychologist who is in our midst, will explain us what mindfulness is and how we can practice it to keep ourselves calm. Before that, I would like to thank all our viewers for their constant support and comments. And I also request to please write your questions, name, your institution name, and your email ID in the comment section. And now I invite our principal, Professor S.P. Singh, to share his views on this topic, and thereafter, Dr. Priyanka Masih to introduce our speaker. Over to you, sir. Thank you, Dr. Vadna Patankar ji. I really take this opportunity to congratulate the Department of Chemistry for organizing this whole web series on optimizing wellness. Knowledge is power, and knowledge can ensure your survival. So, different facets of how to optimize mental well-being have been covered by eminent speakers. And I believe the more we acquaint ourselves with them, the more we can bring out our own customized solutions in a moment of crisis. And it is very important to understand various facets, various therapies, various techniques that can optimize and ensure our mental well-being. And now we have, it is a pleasure and a privilege for me to welcome Professor Amol Ranjan Singh on behalf of St. John's College, Agra. And we really look forward to a very, very meaningful session. Thank you. Good morning, all of you. It's my privilege to introduce Professor Amol Ranjan Singh. Presently, he is the professor in the Department of Clinical Psychology at Ranchi Institute of Neuropsychiatry and Allied Sciences. And as we talk of his educational qualification, he has done his PhD in clinical psychology and also his MPhil, both from CIP Ranchi. Dr. Amol Ranjan has served on different capacity as WIMHANS at the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and also at RINPAS Ranchi. His clinical experience goes more than 25 years, and even his research and teaching experience is more than 25 years, in which includes the national and international projects under the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Labor. And he has been a member, a coordinator, and the office in charge and chairman of about 35 state and national level committees. He has been a resource person of 20 different national
and state level organizations in the area of mental health. And he has been the examiner of more than 20 universities. Dr. Amul Ranjan has supervised more than 20 PhDs under him. And his research papers are more than 200. He is a life member and a life fellow of more than 10 scientific bodies. And the research projects which Sir has undertaken are many, of which the mainly are the projects taken under ILO and UNDP. And he has coordinated a project under the Ministry of Health and Family Welfare, and also coordinated the medical officers training program in psychiatry. And his editorial affiliations are more than 8 affiliations in mainly the psychology related journals. We are very happy to have you, sir, with us. Now over to you, sir. Thank you, ma'am, for very elaborate introduction. And at the outset, I express my gratitude to the principal, St. John's College, Agra, and all the faculty members of the Department of Psychology for giving me opportunity to share some of my experiences, especially in the area of mindfulness. So today, what I will be focusing on, basically that what is mindfulness, how it emerged, in what way can we apply, because होता क्या है कि जब भी किसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो उसका जब तक डे टू डे एप्लीकेशन हमारे लाइफ में नहीं हम लोग सही तरीके से करते तब तक लगता है कि probably this is theoretical aspect. So I would like to highlight the things, what are essential components of mindfulness besides definition, in what way can we cultivate those qualities within us, what best can we do to have a better sense of control in our day-to-day living, because ultimately everybody wants a sense of control in life, and mindfulness is a method which has been there since ages, in fact, which provides us opportunity to study ourselves as well as to the environment, and in what way can we relate better with the help of this particular approach will eventually empower us as a good human being. So I'm just starting, and there are very few slides. I will try to elaborate. जो कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा explain करते चलें, जिससे कि हम सभी लोगों को समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. My slide is visible, I believe. Go forward, sir. It's visible. Okay, thank you. So these are the areas which I am going to cover: contents, origin of mindfulness, what is mindfulness, mechanism, how does it work, cultivating mindfulness, which is essential component, misconceptions about mindfulness as well. I will like to talk about what are the functions of mindfulness, effects of mindfulness, and finally steps for practicing mindfulness throughout the day. That in what way can we continue doing mindfulness in our day-to-day life. So my first slide will be about the origin of mindfulness. कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? अगर आप देखें तो यहाँ पर पता चलता है कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारा पुराना इतिहास रहा है, तो बेसिकली महात्मा बुद्ध was the first person जिन्होंने सबसे पहली बार माइंडफुलनेस टर्म, तो ये 1921 में टर्म कॉइन किया गया इंग्लिश में माइंडफुलनेस, बट बेसिकली इट वाज ए पाली वर्ड, और जिसको सती बोलते थे, और इसका मतलब एक ही था. इट इज बेसिकली समथिंग टू डू विद द अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, इन व्हाट वे डू वी अटेंड द थिंग्स, इन व्हाट वे डू वी लुक एट देम, एंड रिमेंबरिंग दैट आई एम स्टिल अवेयर, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. तो जो महात्मा बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट की हम लोग बात करते हैं, बेसिकली इफ यू सी दिस वाज नथिंग बट बेसिकली deeply personal journey of discovery which led to certain concepts, and the basic concept was yesterday is a memory. That was something which was told by Buddha only, that whatever has happened in the past is a matter of memory. एक से याददाश्त के पार्ट है वो, और उसको उस context में हमको देखना और उसको समझना चाहिए. Tomorrow is the unknown, this is the reality.
हम लोग ज्यादातर समय अपना ऐसी चीजों में बिताते हैं जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है या हमारा अपना खुद का एक सोच होता है. तो tomorrow is the unknown and now is the knowing. So actual thing remains the present. So in what way do we relate with ourselves? How much aware we are, where we are, what are we doing, in what way are we relating with the environment, and in what way do we perceive it? That determines the course of our life. So this is the main lesson which was given by Buddha, and this happened more than 2500 years back. But in due course of time, Eastern part of the world was familiar with this concept, but gradually Western countries have also started realizing that mindfulness, if used properly, can genuinely and definitely empower our life. तो धीरे धीरे जो लॉर्ड बुद्धा ने जो अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, जो उनकी फिलॉसफी थी, जो उनको इनलाइटमेंट हुआ था, अगर आप उसको देखें, उसको धीरे धीरे करके वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी अडॉप्ट करना शुरू किया. थोड़ा बहुत उसमें बदलाव किया, उस पर भी हम आएंगे, और इसको इस तरीके से यूज करना शुरू किया कि इट डज नॉट रिमेन समथिंग टू डू विद द गिवन रिलीजन, but it becomes more secular in nature, and more things have been added to it in order to empower people of different religions and different sects, so that they start embracing this approach, so that we understand ourselves better in time to come. So what is mindfulness? Mindfulness is the awareness that emerges through paying attention on purpose. Most essential component, जो सबसे बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि जो हमको एक जागरूकता अपने बारे में, पहचान अपने बारे में कि क्या हो रहा है, जो आसपास हो रहा है, हमारे अंदर शरीर के क्या हो रहा है, वो अवेयरनेस एक शुरुआत है. शुरुआत हम करते हैं अपने आप से, अपने शरीर के अंदर जो चीजें होती हैं, और प्रेजेंट मोमेंट की हम लोग बात करते हैं. जैसे कि लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो सेड द सेम थिंग, कि हमको वर्तमान के बारे में सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि देयर इज नथिंग व्हिच इज परमानेंट. आई विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल. एंड नॉन जजमेंटली टू थिंग्स एज दे आर. अक्सर हम लोगों की आदत हो जाती है कि हर चीज के बारे में एक अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, हर चीज के बारे में अच्छा या खराब समझते हैं. मेटाकॉग्निशन एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग अप्लाई करने के बाद कई बार इस तरीके से सोचना और समझना शुरू करते हैं कि उसका जो न्यूट्रल वैल्यू है, जो जिसको कहा जाता है, उससे हट करके हम उसके अच्छा या बुरा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, looking at that particular aspect, emotions in a neutral manner, we start assigning certain meanings, certain emotions to that. तो जब इस टाइप की चीजें हम लगा देते हैं तो हम न्यूट्रल नहीं रहते, तो हम अपना जजमेंट अप्लाई करने लगते हैं कि चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, इससे हमको ये फायदा होगा, इससे हमारा ये नुकसान होगा. और जब हम इस जोड़ घटाव के गणित में पड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन होता है वो एक प्रॉपर तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने लगे. तो माइंडफुलनेस का एक ये है. और दूसरा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इज सेंस ऑफ हाइटेंड but detached awareness of sensory and thought experience. That is essential component. वही चीज जो ऊपर हमने बतलाने की कोशिश किया कि एक बेसिकली एक हाइटेंड स्टेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम दुनिया से अलग हो जाएंगे जब हम माइंडफुल रहते हैं. हम किसी बारे में अवेयर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बाकी चीज से अवेयरनेस हमारी खत्म हो गई है. The only thing is that has something to do with the dual awareness. हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं, जिस एस्पेक्ट को सोचना चाहिए तो उसको भी देख रहे हैं. At the same time, you are very much in touch with the world or the surroundings. So it is basically awareness of sensory and thought experiences. Both the things go together, but our reactivity to those things, that becomes limited, and that becomes more and more selective, and which is of course neutral in value. So mechanism of mindfulness, basically this is intentional. This does not happen automatically. This is to be induced, this is to be thought about, this is to be, suppose when we are reading a book about mindfulness, that is all right, we have read, but unless we do it ourselves, maybe that we will never know what actually happens within us when we are trying to go through mindfulness. So this is pure intentional. हम प्रयास करते हैं और उसके बाद ही हम सफल होंगे. हम कोशिश करेंगे कि नहीं, इसमें हम कैसे शुरू करें, and this is experiential. Unless we go through it, we will never have that experience. We can only have the sense of understanding about the concept. But experience matters most, because that further helps us to improve our ability to be more mindful. Because what happens, जब भी हम खुद
जब तक किसी चीज को नहीं करते तब तक उसका अनुभव नहीं हो पाता है। जब हम लोग सिंपल रिलैक्सेशन की बात करते हैं, हिप्नोसिस की बात करते हैं, या किसी भी बात को जब हम थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, या डे टू डे लाइफ में कोई चीज हम पढ़ते हैं किसी बारे में, जब हम उसको एक बार कर लेते हैं, देन वी अंडरस्टैंड कि नहीं, हाउ मच टाइम डज इट टेक, हाउ मच टाइम शुड बी डिवोट फॉर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी इफ यू आर रिलैक्सिंग, राइट। हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस चीज को, है ना। इन व्हाट वे आर वी एबल टू कंट्रोल सर्टेन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स विद इन आवर बॉडी। तो इन सब चीजों को तभी हम सीख पाएंगे जब एक्सपीरियंसर वैल्यू को हम समझें और जब हम इसको खुद करना शुरू करें। फोकस इज डायरेक्टली ऑन प्रेजेंट मोमेंट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन रोकने की जरूरत नहीं है, चीजें आती रहेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई भी दुनिया में ऐसा है जो सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करे। द ओनली थिंग इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दोस थिंग्स विल बी मिनिमाइज्ड ऑटोमेटिकली। तो जब धीरे धीरे रिएक्टिविटी उसके बारे में कम हो जाएगी तो नेचुरली हमारा फोकस प्रेजेंट पर बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट कम्स आउट ऑफ प्रैक्टिस। Focuses on experience, that every moment, every time, whatever we do, suppose we are doing some task and we are repeating it every day we are gaining some experience that teaches us some lesson that is deeply imbibed within us. धीरे धीरे हम उसको अपने अंदर आत्मसात करना शुरू करते हैं और वही चीज जब जरूरत पड़ने पर सामने दिखना शुरू होती है और उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और लगता है कि नहीं, एटलीस्ट जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा अनुभव है, आई एम इन द राइट डायरेक्शन। इस नॉन जजमेंटल, अच्छा है, खराब है, बुरा है, ये सब जो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बना रखा है बेसिकली, दैट इज मोमेंटरी। जो अभी थोड़ी देर के लिए अच्छी है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद उतना अच्छा ना लगे। अभी हम किसी चीज के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद वो अटैचमेंट कम हो जाए। तो दैट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट, इन व्हाट वे डू लुक एट इट, हाउ एसेंशियल दैट इज एट दिस वेरी मोमेंट। तो जो नॉन जजमेंटल का एक कॉन्सेप्ट है, चीजों को न्यूट्रल तरीके से देखने और समझने की जरूरत है, और माइंडफुलनेस में पूरे टाइम इन्हीं एस्पेक्ट्स पर जोर दिया गया है। एंड दिस फर्दर सेट्स द स्टेज फॉर पॉजिटिव पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज हाउ वी कैन ग्रो, दैट इज हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ टुवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। अच्छाइयां, कमियां, हर चीज को करते हुए हम लोग इतना उलझ जाते हैं जीवन में कि जो सामान्य चीजें हैं उसको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते, उनको देख नहीं पाते, नेचर को नहीं एंजॉय करते। अपने घर में बच्चे हैं, अपने कलीग से, उनसे जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ दूसरी चीजें चल रही हैं। तो थोड़ा सा न्यूट्रल वैल्यू के साथ हमको चलना है, जिससे कि हम इस सफर को एक अच्छे तरीके से बिता सकें और आगे अच्छे तरीके से इसको चल सकें। सो हाउ इट कैन बी कल्टिवेटेड? द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बीइंग अवेयर। सबसे पहली बात है कि हमको पता होना चाहिए हम क्या करेंगे। हमको अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर चीज, जो भी हम काम करते हैं, जो बात करते हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो चलते फिरते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पज, थोड़ा थोड़ा कम से कम उसके बारे में अवेयरनेस होगा तो अपने आप से सब कंट्रोल आता है कि नहीं, आई एम अवेयर दैट दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई एम अवेयर दिस इज आई एम सपोज्ड टू डू इट। इफ आई एम हैविंग मील्स देन आई मस्ट बी देयर 100%. If I am studying something, then I should try to be completely focused by being fully aware about it. Living in the present moment, बहुत ज्यादा इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं करना है, ये बेसिक नेचर है, सब लोगों के साथ होता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो देखते हैं कि नहीं, वी आर एबल टू फोकस बेटर, वी आर एबल टू फोकस मोर ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी हमारे अंदर, शरीर के अंदर परिवर्तन होता है छोटा छोटा, जब हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, then we see sensory changes within our body, right? Whatever we are able to visualize, whatever we are able to listen at that very moment, nobody is talking, but still we enjoy those things. So living in the present moment, the moment you absorb yourself, जिस समय आप उसके अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, then you start getting satisfying experience, and that further motivates us. ये बार बार हमको फिर से मोटिवेट करता है कि हम इस प्रैक्टिस को करते रहें। विविंग थॉट्स एज पासिंग मेंटल इवेंट्स। हमेशा याद रखना है, कोई भी चीज दुनिया में स्टेबल नहीं, जो अभी है वो कुछ मिनट, कुछ क्षणों के बाद बदल जाती है, वही हमारे थॉट्स हैं। तो कोई भी परमानेंट चीज तो है ही नहीं, और इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था स्वयं लॉर्ड बुद्धा ने। उन्होंने ये बोला था कि देयर इज नथिंग व्हिच इज परमानेंट, सो इम्परमानेंस इज द ओनली थिंग व्हिच इज परमानेंट इन अ वे। तो विविंग थॉट्स एज पासिंग मेंटल इवेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमको ये पता होता है कि अरे ये भी चीज जो चल रही है, दैट इज फॉर टाइम नहीं,
दिस विल आल्सो पास। तो चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो, चाहे कोई खराब अनुभव हो किसी का, है ना, जब इस एस्पेक्ट से लेते हैं तो बहुत ज्यादा उसके लिए खुशी या बहुत ज्यादा दुखित होने की आवश्यकता नहीं लगता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज रूटीन, दिस इज समथिंग व्हिच इज एक लगातार सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। टर्निंग ऑफ द ऑटो पायलट, बहुत बार हम लोग चीजें करते रहते हैं और बिल्कुल उसमें जो हमारा अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, इस कमरे से उठे दूसरे कमरे तक गए, कुछ ढूंढे वापस आ गए, फिर बैठे कुछ और सोच रहे हैं, और इधर उधर दिमाग जाता रहता है। तो ये जो है इसको बंद करने की जरूरत है। ऑटो पायलटिंग डिस्ट्रैक्ट्स अस अ लॉट एंड मेक्स अस टू डू द थिंग्स। वो ऐसी चीजें हमको करने के लिए बाध्य करता है जिसका हमको कुछ समझ में नहीं आता बाद में कि हमने ऐसा क्यों किया, हम ऐसा क्यों कर रहे थे, हमारी ऐसी क्यों सोच है ना। लेकिन ये सब लोगों के साथ होता है। इसको बिल्कुल भी ये नहीं मानना है कि कोई ऐसी चीज हमारे अंदर हो रही जो शायद लोगों में नहीं होता, नहीं, सबके साथ होता है। कितना होगा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको हमको समझना होता है कि ऑटो पायलटिंग वाला जो सिस्टम है इसको कंट्रोल किया जा सके कि कम से कम कोई चीज करने के पहले हम उसके बारे में थोड़ा सोचें, और जब हम उसको करें तो उसमें इन्वॉल्व हो सके। कोई भी थिंकिंग है, कोई भी एक्टिविटी है, किसी से मिलना है, किसी से मिलने जाना है, कोई काम है, जाते हैं हम किसी काम के लिए बात करने और वहां पर दूसरी बात करके चले। सो दिस पार्ट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। थोड़ा सा ध्यान रखें। एक्सपीरियंसिंग थिंग्स डायरेक्टली, हमेशा जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी चीज में, बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसको एसिमिलेट करते हैं, तो जो आपके अंदर के इमोशनल रिएक्शंस हैं, रेगुलेशन जिसको हम लोग इमोशनल रेगुलेशन, जिसके वजह से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, एंड वी विल बी एबल टू हैव अ बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल। उसको डायरेक्ट लेना है, उसको इनडायरेक्ट तरीके से नहीं लेना। जो भी रिएक्टिविटी उसको कई बार बोलना है, कई बार अपने आप से क्वेश्चन करना है, सो दैट एक पॉइंट पहुंच जाए कि हमारा रिएक्टिविटी उस चीज के लिए थोड़ा कम हो जाए, और जो हम शार्प रिएक्शंस कई बार देते हैं, वी लूज अवर टेम्पर, उस पर भी हमारा कंट्रोल है। अप्रोचिंग इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इवेंट्स, कभी अवॉइड नहीं करना है, उसको अप्रोच करना है और बार बार अप्रोच करना है। तो धीरे धीरे उसमें जो एंजाइटी प्रोवोकिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, जो हमको उसको देखने से घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एंजाइटी बहुत हो जाता है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं किसी किसी चीजों को। जब हम बार बार अप्रोच करेंगे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, हम उसको और बेहतर समझ पाएंगे, है ना। और यही माइंडफुलनेस की जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, करवाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बेहतर बनाता चला जाता है। माइंडफुल ऑफ रूटीन एक्टिविटी, जैसे हमने आपको बोला ऊपर के ऑटो पायलटिंग वाला जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करना है, उसको कम से कम करना है, और जो भी चीज हम करते हैं थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, अब हमको उठना है तो हमको क्या करना है, हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं, रात में कैसे नींद आई, बिस्तर कैसा, तो छोटी छोटी चीजें। सो दैट हेल्प्स अस टू फोकस मोर एंड मोर ऑन दीस थिंग्स एंड दैट ऑलवेज गिव द फीलिंग। अदरवाइज क्या होता है, हम रूटीन में चीजें करते चलेंगे और पता भी नहीं रहता कि हमने कब और कब क्या कर दिया। इम्परमानेंस, जो हम अभी ऊपर ही बदला है, फिर से यहाँ पर अलग से इसको रख रहे हैं कि थॉट्स और इमोशंस दोनों बिल्कुल इम्परमानेंट चीजें हैं, और यही सबसे ज्यादा हमको ट्रबल देती है डे टू डे लाइफ। तो ये जो कंसेप्ट है कि थॉट्स है तो ठीक है, अभी थॉट्स आया, कुछ दिन बाद बदल जाएंगे। इमोशंस भी, अभी हम थोड़ा नाराज हैं, हो सकता है थोड़ी देर नॉर्मल हो जाए, बड़े खुश हो जाए। हमारे इमोशनल रिएक्शंस keep varying depending on the time, depending on the surroundings, depending on the people we come in touch with or contact with. So impermanence is the only thing which is permanent. जब एक ही कंसेप्ट आ जाता है कि कोई भी चीज यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहेगी, तो अपने आप कहीं ना कहीं लगता है चलो यार ये बात ठीक बात है कि अगर आज हमको परेशानी तो ऐसा थोड़ी कि हमेशा रहेगी। अगर हम बहुत ज्यादा खुश हैं तो हमको ये भी याद रखना चाहिए कि नहीं, ये खुशी तभी चलेगी जब हम इसके लिए आगे और अच्छा प्रयास करें, बेहतर कोशिश करते रहे। जैसे लोग फिटनेस के बारे में बात करते हैं, वेलबींग के बारे में बात करते हैं, दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस कैन नॉट बी अटेन्ड इन वन डे, एंड इवन इफ अटेन्ड दिस इज टू बी सस्टेन्ड। इसको लगातार बना के रखना है, इसके लिए हमको सर्टेन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना होगा, जिससे कि हम उस चीज को करते रहें, और ये हमको एक तरीके से फीडबैक भी देता रहता है कि नहीं, आई एम एबल टू डू दैट। कंपैशन फॉर सेल्फ एंड अदर्स, दैट इज another important ingredient for being a good human being. Compassion के बिना किसी के लाइफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। Compassion for self, you must respect what we are, you must understand what we are, you must look after ourselves,
At the same time, you must look after others, must care about others, must respect others. तो जो खुद को रेस्पेक्ट नहीं करता, खुद की केयर नहीं करता, खुद का ध्यान नहीं देता, तो चलिए उसका दूसरे पर भी उस टाइप की चीजें नहीं है। तो कंपैशन इज इंपॉर्टेंट इन डेटिंग। हमेशा दूसरों को हेल्प करने का एटीट्यूड, हमेशा लगे कि नहीं, इफ आई कैन डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, दैट इज अ वेरी सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। तो जो इननेट चीजें होती हैं उसको धीरे धीरे करके, कई बार अगर हम मिस कर रहे हैं किसी चीज को, या कहीं पे हमारे अंदर कुछ लगता है कि ये शायद कंपोनेंट की कमी है, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस, आई एम नॉट एबल टू डू द थिंग्स, we must inculcate those things. So cultivating mindfulness means that we have to develop certain characteristics within ourselves in due course of time, जिससे कि धीरे धीरे करके हम अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में समाज में स्थापित कर सकें। रिलेटेडनेस और कनेक्शन टू द सेल्फ। हम दुनिया भर से रिलेट करते हैं, खुद से हम कितना करते हैं, खुद पर अपना कितना टाइम देते हैं। हमको पता है हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ की हम लोग बात करते हैं, इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, सोशल लाइफ की बात करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस के थ्रू बढ़ता है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड। हम जब तक अपने आप को स्वस्थ और बेहतर और अच्छे से रिलेट नहीं करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है कि हम दूसरे के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें। इसीलिए कल्टिवेटिंग माइंडफुलनेस एक ऐसा सिस्टम है कि हमको अपने आप को ग्रो करना है धीरे धीरे। एवरी डे वी हैव टू बिकम मोर एंड मोर अवेयर। वी मस्ट अंडरस्टैंड प्रेजेंट इज द ओनली थिंग, इज द फैक्ट। व्हाटएवर has happened, it is a matter of past. Whatever is likely to happen, that is future. We don't know actually what real thing will happen. तो past और future के साथ जो चीजें हैं उससे हट करके थोड़ा सा प्रेजेंट को करें। यही प्रेजेंट जो है बाद में पास्ट बनेगा और आने वाले टाइम में वो फ्यूचर का भी पार्ट लेता है, शेप लेगा। There are certain misconceptions also about mindfulness. Having blank mind, ऐसा लोगों को लगता है कि शायद अगर माइंडफुल होने लगेंगे तब तो दुनिया से हम कट जाएंगे, हाँ बिल्कुल खाली हो जाएगा दिमाग। नहीं, एम्प्टीनेस का एक जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था बुद्धा ने भी, और उसके बाद जितने उनके डिसिपल्स थे, और स्पेशली ईस्टर्न में तो हमेशा से रहा है। एम्प्टीनेस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजों से अपने आप को अलग कर लेना। लोग बोलते हैं बुद्धा रिनाउंस द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया नहीं छोड़ा, वो दुनिया में ही थे, लेकिन जो बहुत सारी इश्यूज होते हैं उससे धीरे धीरे करके अपने आप को अलग करते। लेकिन ये ब्लैंक माइंड नहीं होता है। दे आर वेरी एनर्जेटिक पीपल एंड दे थिंक वेरी रेशनली, और जरूरत पड़ने पे बहुत अच्छे से किसी भी कार्य को निष्पादित भी करते हैं। इसलिए हैविंग ए ब्लैंक माइंड इज नेवर समथिंग टू डू विद द माइंडफुलनेस। कि जो लोग करेंगे उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, दे बिकम सेल्फ सेंटर्ड, है ना, दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। बिकमिंग इमोशनलेस, ऐसा भी नहीं कि इमोशंस नहीं होते हैं, जब कंपैशन है तो इमोशन होगा। इस चीज को हमेशा याद रखें। कंपैशन का मतलब ही है कि उसमें इमोशनल कंपोनेंट्स आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड। विड्रॉइंग फ्रॉम लाइफ, ऐसा कभी होता नहीं कि सोशल विड्रॉल कैसे, लाइफ से हम अपने आप को कैसे विड्रॉ करेंगे। लिविंग इन द वर्ल्ड एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग जजमेंटल फॉर बिहेविंग। कुछ लोगों को लगेगा कि शायद हमारी रिएक्टिविटी जितना होना था, ऐसा नहीं। यू आर इक्वली कंसर्न, you are fully having lots of compassion for that individual or for that society, and you are doing your best to help that society or the individual, or to escape the pain, avoidance जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान है उससे बाहर हो जाओ। Renouncement does not mean that you are running away from the world. No, you are very much there. You are very much part of it. You are participating everywhere. लेकिन फिर भी हर चीज के लिए छोटी छोटी चीजों में जो हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे बड़े हेल्प हम नहीं कर पाते। और जो पेन का एस्केप का जो सिस्टम इसमें आया इस माइंडफुलनेस में, इसका कहने का मतलब ये था कि लोगों को लगा कि नहीं एक तरीके से अवॉइडेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द फैमिली, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ योरसेल्फ, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इसको बिल्कुल लेकर के चलना है। जब आप स्वस्थ रहोगे, बेहतर रहोगे, अच्छी सोच रहेगी, न्यूट्रल सोच रहेगी, तभी आप किसी को हेल्प भी कर सकते हैं और किसी को परेशानी से बाहर भी ला सकते हैं। सीकिंग ब्लिस, ये एक सोच है कि इसको अगर रिलीजन से जोड़ लें तो हो सकता है किसी ने कभी सोचा रहा हो, बट इसका कोई भी कनेक्शन इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं है। बट दिस इज सेंस ऑफ सैटिस्फाइड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर डूइंग इट, दिस इज सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। सो
सीकिंग ब्लिस, ब्लिस एक फीलिंग है जो आपको कब लगे यू फील दैट sort of bliss you are having and you will not, but that is a misconception. We cannot have objective to see bliss through mindfulness. No, this is routine. Everybody has to do it. Everybody does it. Sometimes you are mindful of certain aspects of life. Sometimes you are not. Functions of mindfulness, acceptance of thoughts. सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं, जो भी चीजें हम इनकाउंटर करते हैं अपने लाइफ में, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं. एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, उससे भागते रहते हैं, उसको अवॉइड करते रहते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं और लगता है कि इसको कैसे कंट्रोल करें. द मोमेंट यू एक्सेप्ट, हमसे कोई गलती होगी, द मोमेंट आई एक्सेप्ट माय फॉल्ट्स, ऑटोमेटिकली एंजाइटी लेवल विल कम. जब हमको पता है कि हमारे अंदर ये विचार है, सबसे पहले उसको स्वीकार करना, उसको समझना है कि है, फिर ये समझना है कि नहीं, दिस इज नॉट परमानेंट. थॉट्स अभी आए हैं, बदल जाएंगे, लेकिन मेटा कॉग्निशन की वजह से कई बार वो चीजें लगातार चलती रहती हैं. तो इसको धीरे धीरे करके समझना है कि नहीं, दिस इज इम्परमानेंट, व्हिच मैटर्स मोस्ट. दिस इज नॉट ए परमानेंट फीचर. जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल उससे विचलित नहीं होना. आज जो थॉट नेगेटिव है, अपने आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, उससे आप बाहर भी आ जाएंगे. एक्सपोजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस. ये क्या होता है एक्सपोजर एंड मिनिमाइजेशन? जब आप किसी चीज को बार बार उसी थॉट को, जब आप हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, when you are passing through that, what all physiological changes are occurring with your body, in what way do you react emotionally? Automatically जब आप उसको फेस करते हो किसी चीज को, then you become desensitized. धीरे धीरे उसका जो इंटेंसिटी था एंजाइटी अराउज करने का, ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है. तो बार बार जब किसी चीज को एक्सपोज करेंगे विदाउट फियर, विदाउट अटैचिंग एडिशनल न्यूट्रल negative value to that, automatically that thing will start coming down. So exposure and minimization, experiential avoidance. Avoidance अगर हम जब शुरू करते हैं, तब समझिए परेशानी बढ़ना शुरू होती है. जब किसी बात को अवॉइड करें, वो बात नहीं करना चाह रहे, यानी कि हम अपने मन के अंदर बहुत सारी चीजें रखते जा रहे हैं, है ना, और वो पाइल अप होकर के बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, और फिर those things will give rise to different type of psychophysiological problems within us. ठीक है, psychological disturbances होगा, ठीक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वी आर नॉट एबल टू फोकस, ठीक है, जो शुरुआती लक्षण मिलता है. और उसके बाद तो बहुत सारे साइकोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोमेटाइजेशन, सारी चीजें होंगी. कॉग्निटिव चेंज, नो थॉट इज परमानेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको बिल्कुल एम्फेसाइज करना है. जब हम लोग खुद माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, जब करते हैं इसको, तो कोई भी चीजें, सबके जीवन में बहुत सारे विचार होते हैं जो हम नहीं चाहते कि रहें, है ना, तो उसको हम लोगों को यही समझना है कि नहीं, ठीक है, ये बात अभी आ रही है, कि हमेशा नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू को हम कम करें, उसके जो पोटेंशियल है उसको धीरे धीरे कम करना है. और वो तभी कर सकते जब उसको हम अनुभव करें, जब उसको फील करें कि होता क्या हमारे साथ, क्यों आता है, कहाँ से आता है. धीरे धीरे जब आप कर रहे हो माइंडफुलनेस करने के बाद अपने उस प्रैक्टिस में, देन ऑटोमेटिकली यू हैव अ बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल. लगता है कि ठीक है, जो कॉग्निटिव चेंज है, दैट इज रूटीन, दैट हैपेंस विद एवरीवन. नोबडी इज विदाउट any thought, nobody is without negative thought, nobody, someone who has never faced such type of situation. जब आप उस aspect में सोचना शुरू करते हैं, then you think that yes, you are no way different, you are also like others, and you strive that धीरे धीरे करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. और बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे mindfulness based say stress reduction program, right, then mindfulness based cognitive therapy, that is very popular, right, acceptance and commitment therapy. बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके इम्बाइब कर रही हैं माइंडफुलनेस को, है ना. और माइंडफुलनेस के एप्लीकेशन का फायदा ये है कि that helps us to grow better in our day-to-day life, helps us in better adjustment, helps us that we are able to again look at ourselves as a different individual, refined person, totally transformed. पहले शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गुस्सा आ जाती थी, चीजों को, बहुत बातों को दिल से लगा के बैठे रहते थे, कई कई दिन तक लगता था ये सब चीजें बेकार हो गई. स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग की हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हम लोगों के पास आते हैं, दे कम विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन. सो दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस. थॉट वर्सेस रियलिटी अंडरस्टैंडिंग. बहुत सारी चीजें सिर्फ थॉट्स हैं,
उसका वास्तविकता से कोई संबंध होता ही नहीं, सिर्फ विचार है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। और इस एस्पेक्ट को हमको समझना ही होगा। और ये सबसे अच्छा समझते हैं जब हम थोड़ा रिलैक्स रहें, जब हम माइंडफुल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर आप मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल हम लोग बोलते हैं कि आप लाई डाउन करने के बाद यू स्टार्ट फ्रॉम योर ब्रेथ, गो टू योर टोज एंड ग्रेजुअली यू कम अप। तो धीरे धीरे जितने भी सेंसेशंस होते हैं बॉडी में, और जब नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल आएगा जब ब्रेन तक पहुंचते हैं ऊपर, है ना। सो दैट इज हाउ, एंड देन थॉट और रियलिटी के अंडरस्टैंडिंग को समझना जो डिफरेंस होता है, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एज ए बेटर फंक्शन। इफेक्ट्स ऑफ माइंडफुलनेस, better sense of control. I have been emphasizing on this point because this is the most important aspect of it. परेशानी हमको कब होती है? जब हमको लगता है कि शायद चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। हम नहीं चाहते कि गुस्सा हो जाते हैं, हम नहीं चाहते इन चीजों को भूल जाते हैं, है ना। बहुत सारे काम होते हैं, हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होता है, एंजाइटी बढ़ने लगती है, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है जब सेल्फ अवेयरनेस से हम बात शुरू करते हैं, ठीक है। जबकि अवेयरनेस शुरुआत हुई और उसके बाद जो दूसरे एस्पेक्ट्स माइंडफुलनेस के हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, तो आप देखेंगे सेंस ऑफ कंट्रोल इज ऑलवेज बेटर। इंप्रूव इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, बोथ आर इंपॉर्टेंट। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब रिलेशनशिप की बात होती है ना, तो इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, आपका खुद के साथ कैसे संबंध है, आप खुद को किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इन व्हाट वे डू यू थिंक, सेल्फ इमेज जो हम लोग बात करते हैं, इन व्हाट वे डू यू रिलेट विद अदर्स, इन व्हाट वे डू यू रिलेट विद योरसेल्फ, एवरीथिंग डिटरमिन्स आवर बिहेवियर, एवरीथिंग आल्सो डिटरमिन्स द कोर्स ऑफ आवर डेवलपमेंट इन आवर लाइफ। ये डिसाइड करता है कि नहीं हम आगे चल करके हम कैसे रहेंगे। तो जब हम माइंडफुल हो जाते हैं बहुत सारी चीजों पे, हम कब पढ़ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या सिलेबस है, क्या चीज हमको पहले पढ़ना चाहिए, तो ये सब चीजों का जब एक सिस्टम बनता चला जाता है, then you become confident, सेंस ऑफ कंट्रोल आ जाता है ना। नॉर्मल कोर्स में हम लोग रूटीन में चीजें करते चले जाते हैं, करते सब चीजें, बट ऑटो पायलटिक सिस्टम, सोच कुछ रहे कर कुछ रहे, वो काम हो भी गया एंड आई एम नॉट श्योर कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जब आप ड्राइव करते हो तो आप कहाँ से निकल जाते हैं, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। तो ड्राइविंग में तो हमको फोकस करना है, ड्राइविंग में दैट इज ऑल राइट, लेकिन फिर भी जब हम रूटीन वर्क भी करते हैं, कहीं पर भी बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, इंप्रूव साइकोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, ठीक है। पैनिक अटैक में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर बदलाव आती हैं। तो जब हम ये सब रहते हैं तो ये सब चीजों का एस्पेक्ट जो है, जो एक्सट्रीम निगेटिव रिएक्शंस हम लोगों को देता है, जो एक्सट्रीम एंजाइटी प्रोवोकिंग चीजें हमको महसूस होती हैं, है ना। जब वो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रीदिंग का सिस्टम है, हार्ट रेट है ना, जो टेम्परेचर है बॉडी का, हर चीजें हमको लगता है कि नहीं सब नॉर्मल है। तो क्या होता है, तुरंत घबरा गए, लगता है सांस रुक जाएगी, बात नहीं कर पा रहे हैं, है ना। चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने लगते हैं, इंसान कुछ बोल रहा है उसको हम दूसरे तरीके से लेने लगते हैं, तो बहुत सारे बदलाव हमारे अंदर आते हैं। तो इसीलिए माइंडफुलनेस का जब डे टू डे लाइफ में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक फर्क आता है, जो आपको सबसे पहली बात तो सेंस ऑफ वेलबींग खुद के अंदर क्रिएट होगा, और धीरे धीरे वो चीजें बाहर भी दिखने लगती, you start looking better in terms of your behavior, in terms of your direction, in terms of your consistency in activities, in terms of your participation in social gatherings, social activities. तो धीरे धीरे आपका एक ओवरऑल नजरिया जो है दुनिया के बारे में, अपने बारे में, कार्यों के बारे में बदलना शुरू हो जाता है, और दैट इज द एसेंस ऑफ माइंडफुलनेस एक्चुअली। स्टेप्स ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस थ्रू आउट द डे। सवाल ये होता है कि हम डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा बेहतर हो। सबसे पहला अगर शुरुआत किया जाए, व्हेन पॉसिबल डू जस्ट वन थिंग एट अ टाइम, वेरी सिंपल। बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा वर्कोलिक वाला जो कॉन्सेप्ट एक है उस पर अभी शुरुआत में फोकस नहीं करें। जो चीज करें प्रिसाइजली करें, अच्छे से करें, सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड यू मस्ट फील दैट यस आई हैव बीन एबल टू डू इट, दैट मस्ट गिव अस सैटिस्फैक्शन, and that is very simple। आपको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, अगर आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट कर लेते हैं किसी काम को करने के बाद, किसी भी चीज को जीवन में, तो आप समझिए कि एक सफल व्यक्ति के रूप में आप समाज में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। पे फुल अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग, एक भी आदत डेवलप करना है।
जो काम करना है पूरे दिल से करना, लग के करना, उसको पूरा देखना है, उसके एस्पेक्ट को समझना, कंसेप्चुअलाइज करना है हमेशा। जब भी कोई हम लोग डिस्कशन करते हैं, वी ट्राई टू कंसेप्चुअलाइज इट. दिस विल हैपन ओनली व्हेन वी आर एबल टू अटेंड particular aspect of discussion, particular aspect of what we are going through the book. कोई भी चीज जब अटेंशन पे करेंगे तभी हम कंसेप्चुअलाइज कर पाते हैं. इसको उस एस्पेक्ट में हमको देखना है कि पे फुल अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग. धीरे धीरे डेवलप करना है हैबिट. खाना खा रहे हैं तो ये भी देखना है कि खाने में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बनी है, सब्जी है तो किस चीज की है, उसका क्या कलर, छोटी छोटी चीजें हैं, सो दैट यू आर एबल टू enjoy, and that is again the essence of your being mindful, and that is very soothing, very relaxing. और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसको कहीं ना कहीं आपको लगता है you are able to focus and concentrate. When the mind wanders from what you are doing, bring it back, repeat as and when required. हमेशा कई बार होता है जब हम लोग माइंडफुलनेस या रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ब्रीदिंग हम लोग बोलते हैं, ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करिए, इनहेल एंड एक्सहेल, राइट. तो क्या होता है, ध्यान इधर उधर जाएगा. जब आप रिलैक्स हो बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उस विचार से हमको प्रभावित नहीं होना है. कोई विचार ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर दे. दोस थिंग्स बिकम न्यूट्रल. जब आप किसी तालाब के किनारे, नदी के किनारे जाते हैं, वहां वेव्स आप देखते हो वाटर की, दे कंटिन्यू मूविंग and still that is very soothing. There is nothing constant, but that doesn't disturb the river or you, right? So thoughts are ahead. But reactivity towards those thoughts are something to be controlled. और ये कब होगा, जब हम उस स्पेसिफिक चीज के बारे में सोच रहे हैं. बाकी सब चीजें तो न्यूट्रल है. आप घर से बाहर निकलते हो किसी काम के लिए तो बहुत सारी चीजें आप देखते चलते हैं, है ना. दोज थिंग्स आर न्यूट्रल. ठीक, आप उससे प्रभावित तब होते हैं जब वो इतना ज्यादा प्रभावशाली हो कि आपका ध्यान उधर ले जाए. अदरवाइज इफ यू आर फोकस्ड, यू आर एबल टू डू द थिंग्स ऑफ योर चॉइस. Discover your distractions without being disturbed. Distraction एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा होगा, सबके साथ होता है, लेकिन उसके वजह से परेशान नहीं होता. कई बार लोग बोलते हैं रिलैक्स तो फील सर, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत आ रहा है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं. अरे वही तो एक टाइम कि विचार आएंगे, और विचार आने से कोई दिक्कत नहीं. आप उससे प्रभावित ना हो. उस विचार को आप जितना न्यूट्रल तरीके से देखेंगे उतने कम आएंगे. शुरुआत में ज्यादा आते हैं, धीरे धीरे जब आप अपने फोकस्ड एरिया पे ध्यान दे रहे हैं तो आप देखेंगे यू आर एबल टू हैव बेटर कंट्रोल ऑन दोस डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्टिबिलिटी विल बी लोअर, कम हो जाएगा. टेक ए फ्यू मोमेंट्स टू ब्रिंग योर अटेंशन टू योर ब्रीदिंग. जब भी कभी ऐसा हो तो अपना ध्यान, सबसे इजी मेथड है कि अपने ब्रीदिंग पर लाएं. ब्रीदिंग को इनहेल एंड एक्सहेल, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ ऑलवेज हेल्प्स ब्रिंगिंग योर अटेंशन बैक. हमेशा याद रखिएगा, ब्रीदिंग सबसे अपरेंट चीज है. आप महसूस कर सकते हैं कि आप सांस ले रहे हैं और सांस बाहर कर रहे हैं. ठीक है, दैट वेरी मोमेंट ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू फोकस योर ब्रेथ इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स. फॉर एटलीस्ट 5 फुल ब्रेथ. कहा जाता है कि 5-6 बार जब आप करें, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही, बहुत ज्यादा किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको लगता है डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करिए, टेक ए ब्रेक फॉर ए व्हाइल, टेक फुल ब्रेथ, फुल्ली फोकस्ड, एंड यू विल बी एबल टू हैव बेटर थिंग्स. रिपीट बिफोर स्लीप आल्सो. हमेशा याद रखिएगा, जो ये इसको हमने इसलिए लास्ट में लिखा है कि फाइनली क्या होता है जब हम सोते हैं तो पूरे दिन का इवैल्यूएशन करना चाहिए. और चीजों को जब इवैल्यूएट करते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें तो उसको भी सोचेंगे यस द डे वाज बेटर, आई डिड वेल, है ना. एंड देन यू गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज a few times before you go for sleep, so you will have a very relaxed sleep without much of the disturbance. क्योंकि अगर आप सोते समय बहुत ज्यादा एंजाइटी laden है, automatically that will reflect when you are sleeping. You will remain disturbed during sleep also, right? Here and there करवट बदलते रहते हैं. कई बार लगता है पूरी रात हम सो नहीं पाए, है ना. सोए होंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं सोए, लेकिन you remain disturbed, fatigued. तो ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए माइंडफुलनेस का अच्छा एप्लीकेशन. So this is all I wanted to share with you. Now I'm open for queries and any type of discussion. Okay. Thank you, sir, for sharing such a nice and in a very clear way, and
I think the questions for us are very less because it was very, very clear speech. The thing which you have explained, they were very clear. There is one, there are some questions, Yeah. and Akash Paliwal has asked one question: how to focus on the solution of problem rather just talk about the symptoms of problem. Will you please repeat the question? How to focus on the solution of the problem rather just talking about the problem, like symptom, what the symptoms of the problem, that we are having this, but what are the solution of these problems? Yeah. How can we Yes. One general thing I am telling can you. help us? If there is problem only, then there will be solution, right? And in what way do you look at the symptom, that determines the course of our activity to overcome the problem, right? So solution lies in the problem only. Please understand. अगर हमको कोई परेशानी है, हम उसको ध्यान से देखें, समझें, तो आप देखेंगे कि उसके साथ जो वैल्यू अटैच थी शुरुआत में, which I was visualizing or perceiving as a problem, that does not remain a problem after a while. क्योंकि जब आपको देखने से समझने से लगता है कि नहीं ये सिम्टम था, ठीक है, हमने सिम्टम के बारे में इसीलिए ज्यादा बात किया कि सिम्टम से ही शुरुआत होती है किसी भी परेशानी, वही दिखाई देता है, वही समझ में आता है। तो सिम्टम को हमारा देखने का नजरिया अगर बदल जाएगा तो समाधान उसी में निहित है ना। तो मेथड्स तो बहुत सारे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग भी करते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन एक नॉर्मल कोर्स में हमको उस पर्सपेक्टिव में समझना होगा कि जो भी परेशानी है, जो भी सिम्टम है, उसको हम पहले एनालाइज करें, उसके विषय में अवेयर हों, और ये जरूर देखना चाहिए कि क्या हम आइसोलेशन में इन सिम्टम्स को मैक्सिमाइज करके या मैग्नीफाइड तरीके से देख रहे हैं, या उसको धीरे धीरे न्यूट्रलिटी की तरफ ले आए, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो परेशानी थी उसके जो हम उसको परेशानी के रूप में देख रहे थे, उसको सोचने का नजरिया बदल जाए, तो सॉल्यूशन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट इमर्जिंग. That is what we do in therapies also. Yeah. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. One more announcement I want to do for all the students who are writing their name and their institution name. You please write your email ID also, because we want to send you the certificates of participation. So we need your email ID. Yes, Dr. Preeti Masi, Yes. is there any other questions you can ask? Sir, I have a very relevant question, which is, I think is very important for us to know that there are many therapies that are based on mindfulness. And the most common one and most, I think I'm audible. I'm audible? Yes, you are. Okay. So there is one therapy that is called MBCT, mindfulness-based cognitive therapy, which is quite important and quite relevant in prevention of relapse of drug addiction. Can you give me a short introduction of this thing? What is this actually MBCT? It can be helpful to others because we can practice it at our level only. This is also one of the important methods nowadays. Am I supposed to respond? This is a question for you only. So what I wanted to tell that generally in the substance abuse treatment program, because it is the cognition which keeps disturbing, right? And they are not able to come out of that frame of mind. And that is why there will be some relapse, because their frame of mind is such that they will look at past, they will think about their fears, right? So what happens that if we go for this thing, so gradually they will have better sense of control when they become aware about these problems before they are discharged, because it is the cognitive therapy which is applied in combination with the mindfulness, right? So whatever cognitive changes we expect, we make objectives. So if that is applied with the help of mindfulness, their perception about those cognitions start changing, because it is the stress associated with different type of stimulus present in the environment, right? That makes them vulnerable. नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे दोस्त जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं, तो small things in form of metacognition again make them someone vulnerable and weak. So that is why if these things, even yoga,
it is being done in our institute also, right? So our purpose is just to help the individual to understand that many things in our life can be controlled by ourselves only. So if we are able to understand those aspects control, then our understanding about different stressors in the society or in the world can also be visualized, or our perception will change about those stressors in the society. So automatically we'll have better sense of control, and the chances are that will not be governed by those type of cognitions which are having negative connotation in time to come. हमेशा ये ड्रग डिपेंडेंस यूनिट्स में होता है, उनको डिस्चार्ज के पहले हम लोग जरूर चाहते हैं कि थोड़ा सा योगा वगैरह सिखलाया जाए जिससे उनमें कुछ कंट्रोल आ जाए। और जब कॉग्निटिव थेरेपी की लोग बात करते हैं, सीबीटी की बात करते हैं, तो अगर उसमें माइंडफुलनेस को ऐड करते हैं तो उसमें जो सेशन पहले 18-20 लगता था, इसमें करीब 3-4-5 सेशन और कम हुए। और ये once they adopt it, that will in any case help them not only in that particular area but to manage their stress in a better way in day-to-day life as well. Yeah. Thank you, sir. It answers the first query also. Sir, there is a question from one of our colleagues, Dr. Sanjeev Sharma. He wants to know how to use mindfulness to strengthen our relationship. That is what I was telling, that first thing is that in mindfulness it is said that we have to develop good relation with ourselves, right? Because the moment you develop it, then automatically what happens that when we are neutral about ourselves, then we start becoming neutral with others also. So instead of going by इनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, जब हम लोग बहुत ज्यादा माइक्रो डिटेल शुरू कर देते हैं, that takes the form of metacognition, right? तो उसमें क्या होगा कि जो thinking हमारी है, that is become such that is not neutral. तो हम किसी के साथ जब relations develop होते हैं, किसी के साथ दोस्ती होती है या कुछ बात होती है ना, तो उसके प्लस या माइनस पॉइंट्स के साथ बढ़ते हैं. Instead, we have to understand that we are dealing with another human being, and we have to be such that the other person develops that good feeling for me, as well as I should also have a healthy feeling for the other person. It is basically mindfulness takes time. Once it is imbibed, automatically there are certain attributes which will change. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम न्यूट्रल हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, मान लिया है, करना शुरू कर दिया कि नहीं बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, बहुत माइक्रो डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली द अदर पर्सन्स रिस्पांस आल्सो बिकम्स पॉजिटिव. So it is a matter of time, but once you are determined, you can definitely bring in change in the behavior of other person. Yes. Thank you, sir. Sir, there is another question from Manoj Sharma. He's asking, how can we start mindfulness with old people who are always anxious and negative? Hello. Aisha, speak loudly, Aisha. Sir, there is a question from Manoj Sharma. He's asking, how can we start mindfulness with old people who are always anxious and negative? I am not able to listen the question actually. Sorry. There is some problem actually. No, maybe that there is some issue with us here in network. I don't know. Okay. Sir, Yes. ये आयशा आप किसका क्वेश्चन पूछ रहे थे? This was Major Shama. Major Sharma. Yeah. अच्छा. That question I think she was asking. Right, Aisha? Okay. Of the Major Shama you were asking, right? That how can we start mindfulness with old people who are always anxious and negative? So just, I mean, he wants to know some beginning tips for it. The best technique is we start with the breathing exercise, right? And first 2 or 3, 4 days at least, and they should be only taught how to regulate their breath. Because the moment they are able to regulate their breath, inhale and exhale, right? And gradually we start relaxation. Because first they have to learn how to relax their body,
this will happen only when they are able to regulate their breath. That is simplest method, from toes to the head, right? So once they are able to do it, only then sensory changes within the body can be observed neutrally by these persons. Else what happens that they will have lots of somatic problems also. So that keeps distracting them in between. So we will get into mindfulness only after they are able to have a sense of feeling that they are able to focus on a given stimulus for a considerable period. जब थोड़े समय तक उनको ये विश्वास हो जाता है कि नहीं हम जो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, और सबसे अच्छा होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करवाया जाए बुजुर्ग लोगों को, है ना, और उसके बाद फिर उसमें माइंडफुलनेस के एस्पेक्ट को, अवेयरनेस, है ना, जो फीलिंग हो रही शरीर के अंदर, क्या बदलाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करें, देखें, है ना, और धीरे धीरे फिर वो they will be able to learn and practice it. So this comes out of practice because it is to be inculcated, it is to be learned, it is sort of a skill basically for everyone. Once somebody develops it, you become more and more confident in time to come. जो लोग शुरू में सीखते हैं उनको इतना विश्वास नहीं होता, धीरे धीरे करने के बाद after couple of months they feel quite confident, they are able to understand that what all actually happens within the body when we undergo mindful. And when we become mindful otherwise also in day-to-day life, while walking, while talking, while eating, right, while moving, naturally the course of action, the course of behavior of the individual itself gets changed. Yeah. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Sir, one question I want to ask, that how to make mindfulness more enjoyable? How to make mindfulness more enjoyable? Yes. Please understand one thing, that anything which gives us satisfaction, which gives us better sense of control, which makes us someone unique, that is always something makes us happy and satisfied. So we should not learn it as a part of treatment. We should learn it as a part of a skill in our life. डे टू डे लाइफ स्किल्स के लिए ये सब चीजों को सीखना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, खुश रख सकें और ऐसा बना सकें कि जरूरत पड़ने पे हम लोगों की मदद कर सकें और लोग मदद के लिए हमारे सामने आ भी सकें. तो ये एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है. जब आप करते हो सबसे पहले आपको खुद की शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड. So peace of mind comes not only for by way of doing any type of such type of practice, but by way of involving yourself in the help of others also. तो peace तभी आता है जब चीजों को आप बहुत ही एक अलग तरीके से देखें. आपकी philosophy gets changed about life. Total किस perspective में आप अपने आप को इस दुनिया में देखते हैं और समझते हैं. अगर हम अकेले महसूस करें तो there is no enjoyment actually. That is very impulsive type, like it stage. That yes, we are happy, we are satisfied, we do have everything. That is all right. Like psychologists talk, I am also talking now because we all are psychologists. But the fact remains that ultimately we have to realize that we are not, we cannot exist in isolation. We are part of the larger family, we are part of the larger society, community, and unless we learn to contribute to each other in an affectionate manner, there is no peace of mind or satisfying experience. So mindfulness is something which makes us someone who is neutral in the approach in day-to-day life, at the same time always looking forward to help others, to help yourself. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Our senior colleague, Dr. Sanjeev Sharma, again asked, can mindfulness be helpful in relationship problems? Please understand one thing, that mindfulness is basically, which was initially, if you see historically, this was only developed in order to help the individual to grow better. So anybody who does such type of things, at least he will have better sense of control. That depends in what with other person is relating with. It is a matter of relationship. It consists of more than one person. So in what way the other person is reacting, but if you are able to have understanding that okay, whatever is happening, but this is something. If somebody is giving harsh comment to the other person, if you take it easy, okay, because of certain frustration, certain conflict, the person is behaving like that, automatically will be able to prevail. Automatically, a time will come when you will be able to make that individual understand the reason of his or her reaction, and maybe that gradually
you will be able to help that individual also to have a better sense of control. Because once you are not reacting, the other person feels helpless. So it is our reactivity which makes other person to react in a more sharp manner or in any way, right? So if you are able to remain cool, calm, so naturally the reaction of the other person will be regulated accordingly. Thank you, sir. Thank you. Sir, there is a question from Sumiran Verma. Wants to know, do one should practice mindfulness throughout life or for just some specific time? One for? I mean, should they practice mindfulness throughout the life or for some specific time period? No, I am of very clear view that if we get into it and we start enjoying and that is satisfied, we continue, because in any case that is going to help us in the blood pressure also, right? For example, I am telling you, right? You remain relaxed, you remain happy, satisfied. So this is something which once you start practicing, you make it a point that you are doing it. There is no compulsion as such. The only thing is that in what way do we look at it? If we start practicing certain good things in your life, why should we wait that if there is some adversary in my life, only then I will start doing it? No. Why should we wait? If we have to go for morning walk, we have to go for exercise. Why to wait for the time to come when doctor prescribes that you must go for a walk? So we should not wait. And this is something which is important. That is what we are learning now. And this is a part of life skill programs. And we must enrich ourselves and empower ourselves by way of imbibing such type of practices in our life. Yeah. So there's a question. Do mindfulness bring cognitive flexibility? Hello. Yeah. So do mindfulness bring cognitive flexibility? There's a question. Actually, I am not able to hear. Somehow there is problem. I don't know. In between, this thing happens. Aisha, we cannot hear you. Speak. No, it is not clear. I am hearing, but it's not Yeah. clear. How I don't know. You can repeat. I think there is some Repeat. technical glitch. Aisha, can you repeat? Yes, ma'am. And there's a question. Do mindfulness bring cognitive flexibility? Sorry, actually, somehow. In any case, I will respond to you on phone also. Doesn't matter. Thank you so much. Okay, sir. There is one more question. Yeah. How to control anger? Anger management, right? Yes. Why do we become angry? First thing is because of our reactivity to given stimulus, right? Stimulus is something which is present in the environment. I have not been able to stand that thing, and that is why I have not been able to regulate my emotions. And those emotions, if I have not been able to regulate properly, I react to that thing in a very sharp manner, right? So, so it is because of the fact that it is we have to understand that emotions are under our control. Emotions are very temporary in nature. If I am very much angry, wait for a while, take some breath, 4 or 5 times deep breath. You'll be able to have the sense that probably the time is passing and it will also pass. So that is very philosophical but very practical approach how to control, and that is given everywhere and people are practicing it. And sometimes this type of practice is provided in the institutional setup also. That they are exposed to certain things where their reactivity is sharp, and gradually, in due course of time, their reactivity to those things start lowering. When the patients are admitted in the beginning in our institute, they will have lots of anger on their family members. How come they have come and got me admitted here? I was never willing, I was good enough. Why unnecessary they have kept us here? But after a few days, they start realizing that they actually loved them. They did not want to lose them. They genuinely wanted to help them. And such type of things will automatically make them feel that yes, whatever I was thinking, probably I was not right. I should have rethought before commenting or using bad language for them, abusing or assaulting them even.
or in our institute, we get plenty of cases who are having psychotic features. So sometimes they assault, abuse, and there are some cases of substance abuse also. So this comes in due course of time, depending on in what way we look at those problems in time to come. So it is basically regulation, emotional regulation, and they learn also. Yeah. Right. Thank you, sir. It's one of a difficult area of our life, like anger management. And Yes, yes, we can have some speaker on that. You invite somebody, so that will be wonderful. Actually, aggression and anger management both are important, and yes, sir. would Good be, suggestion. Anna. So, and people would like to be part of it. So, Yes. Yeah. Very good suggestion. Thank you, sir. no, because that is important and that is good area actually. Dr. Abha asks, can mindfulness be helpful in increasing your psychological immunity? Psychological immunity. Yes. Yes, why not? Immunity is what? Basically, when we are able to stand the stress of our life, when we are able to stand different type of negative things, what all is occurring in our life, right? So whatever comes in our obstacle, because it is the psychoneuroimmunology there is subject, right? Like in HIV cases also. So that improves that. And this is one of the methods. This is recommended method of NACO, National AIDS Control Organization, that yoga is something to be practiced in order to help the individual become more immune psychology. Yeah. So that will definitely improve. If you are happy, satisfied, not stressed, so naturally that is going to have a very positive impact in our life. Was I audible? Yeah. Yes, sir. You are audible. Thank you, sir. I think there are not many more questions. Aisha, you were asking some question. You can ask again. I'm audible. Yeah. So there is a question: do mindfulness bring cognitive flexibility? Yes. I am Does extremely sorry, mindfulness, Aisha. I am not able to listen you again. In sir, any case, we will talk she's on phone He if asking, required. asks, No sir, problem. that Yeah. Sorry, does sorry. uh, I don't know what. does does mindfulness lead mindfulness to, bring cognition flexibility? yes. Cognitive flexibility. Okay, I think sir is unable to hear. Now I request Dr. Preeti Masi to please propose the vote of thanks. Good morning, sir, and good morning, everyone. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. There is a saying, God has two dwellings, one in heaven and the other in a thankful heart. I, Preeti Masi, on the behalf of Department of Psychology, St. John's College, Agra, extend a very hearty vote of thanks to our today's eminent speaker, Professor Amol Ranjan Singh, for sharing his knowledge. This was a delightful session, thoroughly educational and entertaining. Your important opinion about origin, mechanism, cultivating, and most importantly, ways of practicing receives a mark of approbation. I am indebted to Professor Amol Ranjan for his enlightening talk on mindfulness. I'm sure that this talk will inspire all the participants to take up a better way of living. I want to acknowledge our principal, Professor S.P. Singh, with due praise and gratitude for intelligently rendering splendid kindness and favoring in initiating and continuing this web series. You have always been in the forefront of all the institutional activities. I'm also indebted to our HOD, Dr. Vandana Patankar, for his inspiring all of us and contributing to the success of all the sessions. I thank the faculty member of psychology for giving me the opportunity to share my knowledge. I
Psychology Department, Dr. Priyanka Masi, and Miss I duties. I appreciate the technical team for performing their duties so well. I thank the valued participants who have listened to the talk with rapt attention and interaction. Before we sign off, an announcement. Dr. Anjali Srivastav will speak on stress management during pandemic in our next session on coming Monday. Have a blessed week. Thank you once again, and have a Thank you, pleasant Thank sir. day. you. It was Thank nice you, having sir. you. Thank you, sir.